an instruction. So it is an instruction which Sumit Prabhu gave it to me what I need to do and continue doing. And when people say His grace, it is not His grace, it is disgrace. So from disgrace to Prabhupada's mercy, we have a long way to go. So I hope whatever he said, I can follow in my life and implement in my life. We'll begin. Om Ajnana Tiramrandasya Jnananjala Shalakaya Chashkur Ulamantena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadanti Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasaki Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. So I have been hearing about all your glories for a very very long time. आप लोग बहुत dedicated भक्ति वृक्षा members हो, काफ़ी टाइम से रेगुलर आते हो, तो बहुत तारीफ सुनी है कई लोगों से मैं मिला हूँ. I've met a lot of people in the past, and I see a lot of people coming to temple regularly for service. Vipin Prabhu, and I've seen a lot of people. I've seen him before, so a lot of familiar faces. So today, what we will do, we'll discuss one shloka of Bhagavad Gita and understand that particular shloka of Bhagavad Gita, how we can apply in our life. So I will talk for some time, and then towards the end, all of you will summarize what we have discussed. Okay? So that means I'll make sure there's nobody sleeping, and towards the tail end, we'll have a test. Okay? So you will not be asking me questions. I will be testing what you know about it. Okay? So towards the end, we'll go around and ask one point from today's discussion कि आज के discussion में आपका key takeaway point क्या है? What can we apply in our personal day-to-day life? नहीं तो information no transformation, ये सुना है? सब कुछ पता है, but कुछ apply नहीं किया जीवन में. तो we are stayed as a ज्ञान platform, not on a विज्ञान platform. So Gyan is knowledge, Vigyan is realized knowledge. So information, no transformation, we don't want that. जितना information पता है, इतना अगर हम implement कर सकते हैं, that is the perfection of our life. This is called agile methodology. I don't know how. This is agile methodology. कि IT वाले को पता होगा. जितना समझ में आया, उतना implement किया. In the introduction with Sumit Prabhu gave, he said, I'm a network engineer. I'm not a network engineer. I have got no idea. I'm a management person. I work all my life as a project manager in different companies. I worked in Telstra for 9 years, worked in IBM for 3 years, worked in Orange, worked in NBN. And from Monday onwards, I'll be under shelter of Nishant Prabhu. Where's Nishant Prabhu? In the kids' room. Achha. So I'll be working from Monday. I'm starting a new gig in University of Melbourne. So देखो क्या होता है. ठीक है? So we'll read one verse of Bhagavad Gita and देखते हैं कि क्या होता है उसमें से. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So we're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter number 9. Who knows the name of the chapter? Yes. The most confidential knowledge. Raja Vidya Rajaguyam Pavitranam Idam Uttam. So Krishna in the 9th chapter 2nd verse, he's saying this knowledge is Raja Vidya Rajaguyam. Guyam means secret, the confidential. तो हम आज कुछ confidential बातें डिस्कस करेंगे. वेरी सीक्रेट है, किसी को बोलना नहीं. वी विल गो एंड टेल एवरीबडी. सब कुछ बोलेंगे.
Krishna is openly revealing this secret, and it is our job to reveal the secret of the secrets. Okay, we'll read one verse, which is verse number 27. Yat kurosi yat asnasi yat juhosi dadasi yat tapasya se kaunteya tat kurusva mad arpana. Translation: whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? जो कुछ आप कर रहे हो करो, लेकिन मेरे लिए करो. यत करोसी यत अस्नासी यत जुहोसी तदासी यत. So whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. It is very clear. Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Srila Prabhupada की जय. Thus, purport ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा purport है. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstances. Everyone has to work to maintain his body and soul together. And Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live. Therefore, he should accept the remnants of the foodstuffs offered to Krishna. Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremonies. Therefore, Krishna recommends, do it for me. And this is called Archana. Everyone has tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized furthering in Krishna consciousness movement. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process, which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day, by chanting the Hare Krishna Maha Mantra around his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi, as substantiated by the 6th chapter of Bhagavad Gita. So what is your understanding of this? Krishna Bhagwan क्या बता रहे हैं इसमें? We'll have a dialogue, not monologue. Monologue में लोग सो जाते हैं, dialogue में लोग जागते हैं. So what is your understanding of this verse? What is Lord Krishna trying to explain to us in this verse? Offered everything to him. Offer everything to him? Yes. Never forget him. Never forget him. Very good. He is the center of everything. Whatever we do, we have to just offer him. Perfect. Do everything, but keep Krishna in the center. Thank you, Prabhuji. What else? Always remember him. Always remember Krishna. Never forget Krishna. Very good. What else? Mold your activities in such a way so that it always reminds us about Krishna. Fantastic. This is the central point of this purport. Mold. Prabhupada, I'll read the purport. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he never forgets Krishna in any circumstances. तो अपना जीवन कैसा होना चाहिए? It should be designed, structured and implemented day to day in such a way that we never forget Krishna. And Prabhupada is writing the word duty. What does the word duty mean by? Duty का क्या मतलब होता है? What is our duty of life? As grihasthas, what is our duty? Prabhuji, what is our duty? Family, okay. Look after the family, very good. What else? There's no wrong answers. Our responsibilities. Our responsibility should be implemented in life, very good. What else? And make sure that, like, if we have child or we have husband and wife, that we all together go towards Krishna, so we dedicate our life together. Very good. So we are moving in such a way that we are progressing towards Krishna. Very good. There's no wrong answer. So please feel free to share your thoughts. Because as I said, information, no transformation we don't want. We want something from you. कि आपकी क्या समझ है आज तक? It's been 2 years. How long has the Bhakti Vaksha been going, Prabhuji? 1.5 years. Jai. Jai. Very nice. You have all done very, very nice.
So what does the duty mean by? Duty का क्या मतलब है? Whatever the activity we are doing in our day-to-day life, Offer it to Krishna. that's all. Thank you. Any संसार में रहते हुए सब कार्य करते हुए भी कृष्ण भगवान को सेंटर में रखना। वेरी नाइस. संसार में रहते हुए भगवान को भूलना नहीं चाहिए. हाँ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं? भगवान को भूल, हाँ, माया की सेवा करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, है ना? So duty at every phase of life is slightly different from a materialistic perspective. So the first 25 years of age, what do? We learn and grow. LG. याद रखना, LG. Life is great. Life is good. So we learn and we grow. सही है ना? फर्स्ट 25 साल हम क्या करते हैं? यही करते हैं. जीवन में कुछ सीखा और हम बड़े होते हैं. Then next 25 years, what do? We engage and we earn. रोकड़ा. I'm a Gujarati. Focus is on, Prabhu भी गुजराती हो ना? Right. So focus is on रोकड़ा. है ना? Business. हाँ. So engage and earn. इसमें compromise नहीं चाहिए. Third phase of life क्या होता है? Detach and attach. So we have to get detached from what we have achieved so far, what we have done so far, and we have to get attached to the right things in life. And the last 25 years, क्या होता है? Pray and prepare. है ना? छोड़ने का समय आ गया है, तो pray करो और prepare करो. But in सब में, the common thing, the fundamental denominator of everything what we do is to engage ourselves in Krishna consciousness. First 25 years are called Brahmachari Ashram. Then the next 25 years is called Grahastha Ashram. यहाँ पे गृहस्थ कौन कौन है? सब. The next. Huh? Yeah, so happy. We are very happy for you. But it's going to be. Oh Krishna. जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है. सब पछताते हैं. This material world is designed in such a way that you cannot be happy. We always think that the grass is greener on the other side of the fence. दुःखालयम अशाश्वतम. अरे आप 1.5 साल में आपने PhD कर लिया. जाए. So the first 25 years is फटाफट. Second 25 years. Third 25 years. Ashram. Please focus on the word ashram. Huh? And the fourth. तो हर फेस में आश्रम होता है. What is the meaning of ashram? Rest. Okay. What else? आश्रय लेना किसी के अंडर. आश्रम का मीनिंग है टू टेक आश्रय. एंड टू टेक आश्रय ऑफ whom? Of God, Krishna. Right? So Prabhupada, when he went to US, he never said only worship Krishna. If you believe in Jesus, have love towards Jesus Christ. If you believe in Allah, have love towards Allah. He said, I'm not here to change from Jesus to Allah, Allah to Krishna. No, that is not the point, Prabhupada said. You love God, that is important. And we have the same message. We have the same message. We never tell, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार. That is not the message. जहाँ पे हो, वहाँ पे सबसे सही काम करो. So all these phases, the word Prabhupada said, duty, as Mataji said, we have to mold our life in all the phases of life in such a way that the foundation, the denominator is always Krishna consciousness. Right? This human form of life is very, very rare and very auspicious. Krishna himself says in Bhagavad Gita, 7th chapter, 19th verse, Bahunam janmane ante jnanamam prabandante vasudeva sarva iti sa mahatma sudurlabha. What is Krishna saying? कि बहुनाम जन्मन अंते. क्या मतलब हुआ? After many, keep on going, and then we get finally a human form of life. And this human form of life is very rare.
Sudurlabha. And in this rare opportunity, if we understand that Vasudev, Krishna is everything, that is the topmost understanding. तो जब हमें ये मनुष्य का जीवन मिल गया है, मिलने के बाद ये भी पता चल गया है कि कृष्णा इज एवरीथिंग, देन इन स्नेक एंड लैडर, यू हैव प्लेड स्नेक एंड लैडर, वो गेम तो पता है ना. स्नेक एंड लैडर में if we are at 98 and 100 is the goal, all of us are at 98 and there's a snake at 99. There's a snake at, अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं ना, हाँ पुराने दिन. So we are at 98, all of us. ऐसा कोई बाकी नहीं है यहाँ पे, कोई 94 पे है, 92 पे नहीं, सब 98 पे है. This one snake at 99 can take us back to number 2, 1, 4, 10, 20, whatever. Or if we get number 2, then we can go back to Golok Vrindavan. Go back to Godhead. वहाँ पे क्यों जाना है? Why do we want to go back to Krishna? चलो, let's take 30 seconds and digress. Detour लेते हैं. Why do we want to go back to Golok Vrindavan, Vaikunta, go back to Godhead? क्यों जाना है? वहीं से आए हैं, तो वहीं जाना है. तो वहीं क्यों जाना है? Why do we want to go? He is our eternal father, yes. जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास. Sorry, I'm not Lord Brahma. मेरा एक ही सर है. ब्रह्मा के 4 सर है, तो he can understand from everywhere. So very good. What else? Why do we want to go back? To break this cycle. To break the cycle of what? Of this rebirths. जन्म मृत्यु जरार व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम. प्रॉब्लम क्या है? Do not want to again serve the same boss. Maya ka das, sada udas, Krishna ka das, bindas. So we want to be bindas. We were bindas. We were all bindas. But now we are Maya ka das. चल जमुरे ये कर तो जमुरा वो करता है, चल जमुरे ये कर तो जमुरा वो करता है ना? This is what we do, isn't it? So Maya ka das, sada udas, Krishna ka das, loudly, bindas. So we want to be bindas, right? So if this is not the place where we enjoy, then why stay here, right? Why stay here? So Krishna is giving clearly, okay, whatever you do it for me. Whatever you eat, offer it to me. Whatever austerities you are doing, do it for me, right? And understanding this human form of life is so rare, so auspicious, and only in this life we have the intelligence to worship God. Let that be Krishna, Allah, that is all different. Only in human form of life. अगर human form of life में आके अपनी intelligence use नहीं की और यही करते रहे कि eating, mating, sleeping और defending, आहार निद्रा भय में तो मैं ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो हमने क्या पाया? It is like buying an iPhone 13, 14 है, 13 क्या चल रहा है आजकल? 13. Buying an iPhone 13 which is $1,500 or whatever and just using it as a calculator. कोई $1,500 का मोबाइल खरीदने के बाद उसे सिर्फ कैलकुलेटर के जैसे यूज करेगा तो क्या बोलेंगे? बेवकूफ है क्या? $1,500 कितना हुआ? 75-80,000 रुपीज. अपना तो गुजराती बानिया बोलते हैं हम लोग, बानिया बुद्धि बोलते हैं हमारे में, बनिया. राइट, $80,000 खर्च करने के बाद $2 का कैलकुलेटर की तरह यूज कर रहा है, यही बोलेंगे ना हम लोग. हम लोग वही कर रहे हैं एक्चुअली. दिस इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग. भवनाम जन्म न अंत, इतने जन्म के बाद मनुष्य का शरीर मिला है, हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, कैलकुलेटर की तरह. आहार निद्रा भय में तुमचा, खाना पीना सोना एंड मेटिंग, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. दैट वॉज in the previous yonis we did that, but now it is a time to jiva jago Gaura Chandra Das. So we have to awaken. This human form of life is like a boat. This human form of life is like a boat, and this boat can cross over the nescience of janma mrityu. एक ऐसा शरीर दिया है ठाकुर जी ने, भगवान ने, कि we can cross over. And इसके कैप्टन कौन है? Who is the captain of the human form of life? Guru. Guru is the captain of the boat. And when there's a passenger in the boat, there's a captain in the boat. What do we need? We need the maps. We need the
maps to go from point A to point B. And what are those maps? Shastras, scriptures. So we have now, right now, all of us are very, very fortunate. Why? We have the human form of life. We have the Guru in the form of Srila Prabhupada. We have Shastras in the form of Bhagavad Gita. So what are we waiting for? Where is the difficulty? Prabhupada ji पूछते थे. Where is the difficulty? We should ask a question to ourselves. Ki, where am I stuck at? Where am I stuck? I keep saying, नेहा माता जी हमारे सुबह के चैतन्य चरित्र रीडिंग में आते हैं, and I keep saying कि every एकादशी to एकादशी, every fortnight, we should introspect कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. Am I progressing in bhakti or am I taking a step backwards? जैसे हमारा काम पे होता है ना, जैसे क्वार्टरली रिव्यू, हाफ ईयरली रिव्यू होता है, एनुअल रिव्यू होता है, स्कूल में टेस्ट होते हैं. In the same way, every Ekadashi, apart from not eating and chanting more and associating, the fundamental reason Ekadashi comes in the devotee's life is we have to take a step back and understand कि मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ. Am I progressing in the right direction? Am I taking a step backwards? Do I need to change my direction? Because we have the right form of life, we have the right sampradaya, which is under the shelter of Prabhupada. We have the right scriptures. So what is stopping me? What is stopping me? Am I taking the advantage of this or not? Because the life of a devotee is like a compass. The life of a devotee is like a compass. Compass को आप कहीं भी लेके जाओ, what will it show? North direction. एक ही डायरेक्शन बताएगा. आप कंपास को कहीं भी लेके जाओ, इक्वेटर पे लेके जाओ, नॉर्थ पोल पे लेके जाओ, साउथ पोल पे लेके जाओ, कंपास क्या दिखाएगा? Only one direction, which is north. Similarly, the life of a devotee should be like a compass. No matter whatever situation we have, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, मनस्थिति नहीं बदलनी चाहिए. परिस्थिति लाइफ में बदलती रहेगी. Our circumstances will keep on changing. But मनस्थिति अगर strong होगी, then a परिस्थिति will not impact our life. And for this, we need to do 4 A's. What are the 4 A's we will discuss? Very simple. 4 A's. First A is we have to accept that Krishna is the supreme proprietor of Godhead. He's a supreme personality of Godhead. And whatever is happening now with me, it is a blessing of Krishna. This is acceptance. This is the first A. जब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आई ना, कि we will always be fighting against ourselves कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. No. First thing is acceptance. कि whatever is happening with me right now, it is a blessing of Krishna. Full stop. Not comma. Full stop. जब तक ये समझ में नहीं आया ना, we will not be very focused in our life. हम लोग हमेशा अपने आप ही से fighting करते रहेंगे. We'll be fighting with us, our own self. Is it making sense? Yes. Second A is alignment with Krishna. We have to align our lifestyle, as Mataji mentioned, as Prabhupada said, that our life should be molded in such a way that it is aligning with Krishna. What is Krishna saying? Whatever you do it for me. कुछ भी करो, मेरे लिए करो. And it is not only 1 hour a day, 2 hours a day, 4 hours a day, 24 hours a day. आप लोग हिंदी पिक्चर देखते हो? नहीं देखते? सब प्योर डिवोटीज है. हरे कृष्ण. मुझे एक हिंदी पिक्चर का गाना याद आया. Is it okay if I say some? प्रभु जी, is it okay ना? हाँ? मेरी आदत है. एक पिक्चर थी अक्षय कुमार और रवीना टंडन की. कौन सी पिक्चर थी? चलो बोलो. हाँ? महाराज. चलो परफेक्ट. महाराज का गीत था, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो. Where is this coming from? This bhajan is originating from Bhagavad Gita. This is Krishna's demanding. This bhajan is coming from Bhagavad Gita.
What is Krishna saying? Aham sarvasva prabhavo matyasmatra parvarte iti matya bhajante mam bhuda bhava samavita. Krishna is saying, I am the source of material world and I am the source of spiritual world. The one who understands this wisely engages in my service with all my heart, with all their heart. दिल से पिक्चर का नाम है ना, कौन था उसमें? So यही सब चीज कहां से आ रही है? I am the source of spiritual world and material world. So this is coming from Bhagavad Gita, right? So what is the first A? Acceptance. What is the second A? Alignment. Third A is acting on behalf of Krishna. This is very, very important. Whatever we have now, if we believe that it belongs to me, then we will be in trouble. But if we think that I am a caretaker, ये घर भगवान ने दिया है, ठाकुर जी के लिए मैं यूज करूंगा, ये बच्चे मुझे ठाकुर जी ने दिए हैं, I will use it for the service of Krishna. ये घर, गाड़ी, my mind, my body, BMW, everybody has BMW, body, mind and words. सबके पास BMW आ गए नहीं आज? जिसकी भी इच्छा पूरी होगी नहीं, जिसके पास गाड़ी नहीं थी सबके पास गाड़ी आ जाएगी नहीं. We all have a BMW now. We have body, we have mind and we have words. If we use body, mind and words, BMW, for the service of Krishna, acting on behalf of Krishna, in the mood of a caretaker, कि ये मेरी wife है, ठाकुर जी की है, ये बच्चे है, the kids doesn't belong to me. The kids doesn't belong to me, it belongs to Krishna. Everything what I have, I'm just a caretaker of it. Then हमें attachment नहीं होगा. Where does problem happens in life? Attachment. From expectation comes frustration. Yes or yes? From expectation comes frustration. वहीं से problem होता ना. What is the root cause of frustration? Expectation. And expectation कहाँ से होती है? Attachment. Because we get attached to the wrong things, we are always in anxiety. We are always in fear. We are always in depression. आज ही मुझे कोई बता रहे थे. Today only someone was talking to me that Brisbane से someone was saying my aunt Mausi, she is a multi-millionaire. She was saying to me, multi-millionaire in Gujarat. उनका बहुत बड़ा plywood का business है. But last 4 years, she has gone into depression. Why? Because she was saying that, Mataji who was calling me was saying, she has gone into depression because she was very much attached to her kids and grandkids and now they're not reciprocating back to her. That Mataji बोल रही मेरी मौसी 4 साल से depression में है. And when we have this knowledge of Bhagavad Gita that we are acting on behalf of Krishna, then we will not have any problems in life. जो हुआ ठीक है, जो हुआ वो ठीक है. It doesn't belong to me anyways, right? And the last A is acting for the pleasure of Krishna. Acting for the pleasure of Krishna. What does it mean? Whatever I do, is it pleasing Krishna or not? हम जब जॉब पे जाते हैं, how many of you are working over here apart from Prabhu's? Most of you are working. At work, who are we trying to please? Boss. Immediately पता है. 9 o'clock to 5 o'clock वो बॉस थोड़े पैसे देते हैं हमें, हम उन्हें प्लीज करने में हम अपनी जीवन बिता देते हैं. First 25 years we have worked so hard that we have that one page of resume to satisfy that boss who is never going to be satisfied. Correct? Is it right or wrong? 25 साल हमने इतनी मेहनत की, एजुकेशन किया, 16 साल एजुकेशन, फिर यहाँ पे आए, मास्टर्स किया, PR लिया, किसके लिए? वो बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए जो कभी खुश हो ही नहीं सकता. So इतनी मेहनत करने के लिए we are trying to satisfy someone which we cannot satisfy and we are trying to please him. चलो ठीक है. So when we understand every second someone who is giving me a breath, every second someone who is giving me a vision, every second someone is giving me strength, is it not a responsibility to satisfy him? Is it not a reciprocation of gratitude to satisfy him? Isn't it? आप लोग मानते हो या नहीं? Is it philosophy or is it common sense? Please say yes or no. Is it philosophy or common sense? Common sense.
which is very uncommon nowadays. Common sense is very uncommon nowadays. अगर हम किसी के पास से पेन भी लेते हैं ना, when we give the pen, what do we say? Thank you. एक पेन जैसी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ कई बार पेन नहीं होती, साइन करने के लिए पेन लेते हैं तो इमीडिएटली वी से थैंक यू. जो बंदा हर सेकंड सांस देता है, एक सेकंड सांस रुक भी जाए ना, हिल जाते हैं. आई नो माई फादर्स आंटी, फॉर द लास्ट 5 years ऑफ हर लाइफ शी वॉज कंटिन्यूसली कैरिंग एन बॉटल ऑफ ऑक्सीजन विद हर. वो ऑक्सीजन के बिना मौसी could not, Kaki बोलते हैं, Kaki could not survive. She was carrying an oxygen bottle always. And when I saw my dad's auntie carrying an oxygen bottle, I felt, thank God we don't have to do this. Thank God we don't have to do this. सांस लेने के लिए अगर बॉटल लेकर घूमना पड़ा तो क्या जीवन है. My dad's own sister, मेरी बुआ, फाई बोलते हैं हम गुजराती में, my dad's own sister, जब से मुझे होश आया है, she has very high asthma. I don't know किसी को asthma है या नहीं, or have you seen an asthmatic patient? They struggle to breathe. They struggle to breathe. They constantly with the pump, फिर pump all day. Even today, she is almost 68, 69. अब तक मेरी बुआ वो पंप से रहती है. And when I see her, I think Krishna has given us so much. Krishna has given us so much. If we just have this attitude of gratitude कि भगवान ने कितना कुछ दिया है, then we will never be upset in life. We will never be upset in life. अगर जो सांस लेने के लिए, if we can thank Krishna just for this one thing, कि I'm able to breathe, we will never have any vengeance in life. But because we don't appreciate what we have, हम लोग हमेशा रोते रहते. ये चाहिए. दिल मांगे, Pepsi, right? ये Pepsi है ना, right? So what are the 4 A's we discussed quickly? ये सब लोग कहाँ से मिले प्रभु आपको? ये सब सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज के ब्रीड लग रहे हो मुझे. सो नाइस. और मैं शिक्षा गुरु नहीं हूं, मैं भिक्षा गुरु हूं. भीख मांगते रहता हूं, मैं भिक्षा गुरु, राइट? सो ऑल ऑफ दिस, the 4 points which we discussed, the 4 stages we discussed, the fundamental of all this will happen to us in the form of Shravanam. What we listen will help us to see. हम जो सुनते हैं वही देखने का मन करेगा, और जो देखते हैं वो करने का मन करेगा. There's a beautiful shloka in Bhagavatam, 1st canto, 2nd chapter, 17th verse. It is a very, very beautiful verse. 1.2:17. It says, Shranvata swa katha Krishna punya shravanam kirtanam hriday antohi abhadrani vidonti sut satanam. What is the meaning? Shranvata swa katha Krishna. When we hear about Krishna, who is the supreme personality of Godhead, who is sitting in our heart as Paramatma. Shranvata swa katha Krishna punya shravanam kirtanam hriday antohi. That Krishna, when we hear about Krishna constantly, Krishna comes into our heart. And then he, because of his causeless mercy, he forgets the password to come out of the heart. And when Krishna comes into the heart, the anarthas which are in our heart gets cleansed. Who has anarthas over here? Please, hands down. Hands down. I'm trying to help everybody. Everybody has anarthas. क्या बात है. तो we are in the right forum. Right? Hands down. अच्छा है ना, सबको दो हाथ ऊपर करने पड़ेंगे. मेरे ऐसे को तो 2 हाथ ऊपर करने. I've got lot of anarthas. है ना? So we have lot of anarthas. But when Krishna is so merciful, just by listening about him, Shranvata swa katha Krishna punya shravanam kirtanam. Just by listening about Krishna, Krishna comes into our heart and he sits over there and he starts cleansing it. Right? जब हम लोग जब कई बार होटल में खाना खाने जाते थे पास्ट टेंस में, राइट? खाना खाना जाते थे,
तो उसमें अगर कई बार टेबल पे कुछ गंदगी रह गई तो हम लोग क्या बोलते थे, वेटर जरा प्लीज टेबल आके साफ करो, बोलते थे ना, क्यों? हमें गंदगी पसंद नहीं है. सिमिलरली कृष्णा ऑल्सो डजंट लाइक डर्ट इन आवर हार्ट. कृष्णा डजंट लाइक डर्ट इन आवर हार्ट. ही वॉन्ट्स अ नीट एंड क्लीन प्लेस टू रिसाइड. As we don't like dirty place, अगर हम खाना खाने जाते हैं तो हम पहले बोलते हैं टेबल साफ होना चाहिए, प्लेट साफ होनी चाहिए, सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए. Similarly, Krishna comes into our heart and he does the work of washing powder nirma. Washing powder nirma. Right? He's दूध की सफेदी, because Krishna likes milk. Krishna likes milk and Krishna likes butter. Why does Krishna like butter? Why does Krishna like butter? Because his devotee's heart is like very soft, like a butter. Chai. His butter thick. Chai. Krishna likes a place of heart like butter because butter is very soft. Do we like soft-hearted people or do we like hard-hearted people? Soft or hard? Soft. Ah. Why do we like soft-hearted people? Why? We feel affection Ah. from them, compassion. They are very Compassion. kind. There's no wrong answer. So Yeah. please, this is not a, as I said, let's have a dialogue. Monologue आप सो जाओगे. So why does Krishna like butter? What is the reason? Soft-hearted माता जी ने They बताया. are very kind. Very kind. What else? Very generous. Very kind. Huh? Compassion. इसे माता जी बोले, प्रभु जी थोड़ा. Why does Krishna like butter? Why do we like soft-hearted people? Huh? Attractive. दूसरे का दर्द समझ सकते हैं. प्रभु जी पिघल जाते हैं. Butter. Right? So Krishna likes all this quality and so do we. But when our heart is very hard, we don't like to associate with those sort of people. Similarly, at the moment our heart is very hard. सब कुछ पता होने के बावजूद हम लोग माया को सर्व करते रहता है, हम लोग जोर से, और माया क्या करती है? किक मारती रहती है. चपाट चपाट चपाट, और हम बोलते हैं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ. हम लोग ऐसे ही थोपड़ा दिखाते रहते हैं रोज. Yes or yes? Yes, right. So when we hear about Krishna constantly, Shranvata Swa Katha Krishna, when we hear about Shravanam, when we do constant Shravanam, we will have one gain and three losses. One gain, एक फायदा होगा अगर कंटिन्यूसली भगवान के बारे में जितना हो सके उतना सुना. One gain and three losses. What is the first gain? We will become pure devotees in this lifetime. We don't have to take 10, 20, 50 other lives. Immediately in this life, just by listening about Krishna, Parikshit Maharaj listened for 7 days. 7 दिन में Parikshit Maharaj, he went back to right. Dhruv Maharaj in 6 months. There are a lot of examples. Gajendra, you take every page of Bhagavatam, Maitreya Muni, even Dhritarashtra, when he heard about Krishna after Bhagavad Gita, he had a change of destination. Therefore, listening about Krishna will give us one gain and three losses. What is the first gain? Or what is the only gain? We'll become a pure devotee. We will become a pure devotee. And the three losses, if anybody wants to lose these three things, प्लीज लिसन अटेंटिवली. अगर कुछ जीवन में खोना है भगवान की कथा सुनने से तो ये 3 चीज इमीडिएटली खो पाओगे. फर्स्ट थिंग वी विल लूज इन लाइफ इज शोक, सेकंड इज मोह, एंड थर्ड इज भय. So शोक, मोह and bhai, 3 things we will immediately lose in life. What does shok mean by? Lamentation of past. Lamentation of past. I know someone in Point Cook. She was always in the past. And वो माता जी का, जब she had the first baby, she had a fight with her mother-in-law. ये real story है. Fight with her mother-in-law, and at that particular time, the husband for some reason didn't support the wife.
तो वाइफ और मदर इन लॉ में झगड़ा हुआ. At that particular time, the husband didn't support the wife. She couldn't flush it out of her system. And because of that reason, and because of what she couldn't forget in the past, they got a divorce. They went through a divorce. So the shock, just by remembering the past, constant lamentation of the past, we cannot progress in the future. By listening to Krishna Katha, ये जो पुरानी जो चीजें हैं हमें पता लगेगा whatever has happened to me, whatever is happening to me now, it is because of my choices. ये मेरी जो चॉइस मैंने पहले की है उसी का मैं फल भुगत रहा हूँ. If I go to a hotel and I say, can I have 2 plate of idli and 1 plate of vada, what will I get? 2 plate of idli and 1 plate of vada. Correct? मसाला डोसा, पाव भाजी, पानी पूरी नहीं आएगी. जो मंगाया वही आएगा. प्रसादम का टाइम है. I'm just trying to wake up people. जो मंगाया है जीवन में वो ही आएगा. इसी तरह अगर अपने जीवन में अभी कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है तो किसने ऑर्डर किया है? मैंने ऑर्डर किया है. लाउडली, मैंने ऑर्डर किया है. राइट? हमने नहीं, मैंने ऑर्डर किया है और मुझे मिल रहा है. शोक. फिर मोह. When we listen to Krishna Katha, we forget about all the unnecessary attachments and भय. जो भय है जीवन में वो अपने आप चले जाएगा. Slow, it will not happen overnight. Please understand, this is not an overnight change. आज रात में सुना, कल सुबह मैं प्योर डिवोटी हो गया. ऐसा नहीं होगा. It will take time. Why? Why will it take time? Because we have had this consciousness which is corrupted for many lifetimes. Many lifetimes. So it will take time. It will take time. But what we can do in our limited capacity, we should dovetail everything in the process of Krishna consciousness. Whatever Krishna has given, little or more, everything should be dovetailed in the process of Krishna consciousness. Right? So we should all have an habit of listening as much as possible. Shravanam, more and more. इतना दिन में सुनना चाहिए. 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे. I know a very good friend of mine. He works in a factory. वो मशीन ऑपरेटर का काम करते हैं यहाँ पे मेलबर्न में. He listens to 6 to 8 hours a day. Continuously listen lecture. कभी प्रभुपाद जी के, कभी अमरिंदर प्रभु के, कभी आनंद वृंदावन प्रभु के, कभी इसके, कभी उसके, सुनते ही रहते हैं. And because of that, he gets so much of peace in his mind. Right? So that is the reason Krishna gave us eyelid, not ear lid. किसी के यहाँ पे ear lid है कि कान बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्यों? Why has Krishna designed us like this? So that Shravanam should not stop. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Swaranam, Pada Sevanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam, जो 9 processes है, इसमें first process of Shravanam is the most important process. Everything happens with listening. Everything in life, you think about it, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है. Everything happens with listening. So talking about duties, we were talking about duties. So we have 2 types of duty. One is a primary duty and second is secondary duty. One is in the platform of soul, second is in the platform of body. Why? Because we are not this body, we are a spirit soul. Dehi nosmi yata dehe kaumaram yuvanam jara. Tata dehantra praptir dhiras tatra namuyati. Krishna says this in 2nd chapter 13th verse. That we are not this body. We are a spirit soul. किसी को डाउट है ये चीज पे? We all understand this, right? This is the fundamental aspect. Krishna started Bhagavad Gita from here. First chapter, Krishna didn't speak anything. He was only listening. Second chapter till 7th verse, Krishna didn't speak anything. Second chapter, 7th verse, when Arjun surrendered to Krishna in 2.7, Karpanya Dosho. Then 2.8, Arjun again spoke. From 2.9 onwards, Krishna started speaking. And 2.13, what is he saying? You are not this body, you are a spirit soul. Immediately, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मैं एक शरीर नहीं हूं, एक मैं आत्मा हूं, तब तक भगवत गीता या कोई फिलॉसफी
अंदर जल्दी नहीं जाएगी. Then it will be on a religious platform. Hindu, Muslim, Christianity, Gujarati, Punjabi. No, we are a spirit soul. मैं एक आत्मा हूँ. और ये चीज ना इंडिया के ट्रक ड्राइवर को भी पता है. पीछे लिखा रहता है. इंडिया के ट्रक ड्राइवर को भी पता है कि मैं एक शरीर, आप एक शरीर नहीं हो, एक आत्मा हो. इंडिया के ट्रक ड्राइवर को भी पता है और हमें भी पता है. So what is the difference? What is the difference between the knowledge which the truck driver has and the gyan what we have? The difference is we have a choice to convert the gyan into vigyan, realized knowledge. And to realize the knowledge, the first primary duty of all living entities, all devotees. Okay. Now last 20 minutes, I know I was 8:30 खत्म करना है प्रभु, 8:30 8:40. जब तक आप चाहो. I was being told by 8:30 का टाइम दिया था मुझे. Okay, so They are preparing for bhoga. You can continue, Prabhu. my consciousness is already in bhoga, Prabhu. So the first primary duty of every practicing neophyte devotee is to chant our 16 rounds in one sitting without leaving the house. I repeat, ये थोड़ा heavy होगा. Now whatever I'm going to say, अब तक गुडी गुडी हो गया, advertisement हो गया, अभी product आने वाला है. Right? The first responsibility of all devotees is to chant the 16 rounds या 10 rounds या आप जितने भी राउंड कर रहे हो, इतने राउंड घर छोड़ने के पहले करना चाहिए. If possible, 16 rounds in one sitting every day. Why? Because if we don't give priority to Krishna, Krishna will not give priority. Ye yathamam prabandante tham sataivam bhajamaham. As you surrender unto me, I reward you accordingly. अगर हम 2 राउंड सुबह किए, 2 राउंड दोपहर में किए, बाकी के 6 राउंड शाम में बात करते करते किए और बाकी के 2 राउंड सोने के पहले किए, तो कृष्णा बोलेगा ये सीरियस नहीं है, इसको मैंने इतना कुछ दिया है. I've given him so much, but this devotee is not serious. He is just taking things very lightly. So the first priority of the day should be chantings. इसमें compromise नहीं होना चाहिए. This is the top most primary duty. Without chanting, we should have some serious vows कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, I will not leave the house, something whatever suits all of you. But जब तक ये नहीं करोगे ना, we will be very goody goody devotee. goody goody devotee का क्या मतलब होता है कि घंटी पहन ली, तिलक लगा लिया, 500 रुपए का डिवोटी, 500 रुपीज डिवोटी. यू नो व्हाट इज 500 रुपए का डिवोटी? 300 रुपए की धोती, 250 रुपए का कुर्ता, 30 रुपए का माला और 20 रुपए का तिलक. 500 रुपीज डिवोटी. हमें 500 रुपए का डिवोटी नहीं बनना है. इट इज वेरी इजी टू बिकम अ 500 रुपी डिवोटी. एंड देन हम बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, अच्छा भी लगेगा. बट नो, द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज the chanting, the prescribed rounds, whatever you're doing. I know you are abhi 1.5 saal mein hi ho, so you may be chanting 8 rounds, 10 rounds, 16 rounds, whatever it is, doesn't matter. Don't be round conscious, be Krishna conscious. तो कोई 4 राउंड कर रहा है, ठीक है, मैं 4 राउंड करूंगा. I will show my sincerity to Krishna. I will show my sincerity to Krishna के 4 राउंड के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा. Prabhupada has said one line very beautifully and that has touched my heart. ये लाइन आप आज के क्लास में से कुछ याद रखोगे या नहीं रखोगे कोई बात नहीं, ये एक लाइन याद रखना. Your sincerity is your God consciousness. I repeat, your sincerity is your God consciousness. कुछ भी अब तक last 45 minutes में whatever I have spoken, whatever I'm going to speak, if you forget everything, that is fine. ये एक लाइन याद रखना. वो अमिताभ बच्चन का था ना, दीवार में मेरा बाप चोर है ना, वो लिखा था ना. इस तरह से हमारे दिल में ये लाइन होनी चाहिए. इट इज वेरी इजी टू पुट अ तिलक ऑन द फोरहेड, बट टू पुट अ तिलक ऑन द हार्ट मीन्स टू बी सिंसियर टू प्रभुपाद, टू बी सिंसियर टू कृष्णा. एंड
your sincerity is your God consciousness. It is a very heavy statement. It is a very heavy statement. I don't know, but do you understand the gravity of what has just come out of my mouth? And I didn't prepare, it just came out. But it is very, very heavy. So every practicing devotee, every neophyte devotee should take a vow. मैं जब तक अपना chanting खत्म नहीं करूँगा, chanting खत्म नहीं करूँगी, मैं जीवन में पानी नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा, घर नहीं छोड़ूँगा, whatever it is. I can tell about myself. I don't want to boast about myself. It's been 7 years. 7 साल हो गए. आज तक एक दिन ऐसा नहीं कहा कि 16 राउंड खत्म किए बिना मैंने घर छोड़ा है. I have temple services in the morning in the temple. I have obviously a job. I have a wife. I have kids. I've got altar at home. तो मेरे गौर नेता को उठाना होता है, तुलसी महारानी की आरती होती है, सब कुछ होता है. 7 साल हो गया. आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने 16 राउंड नहीं किए. Same thing with my wife. Same thing, Ojasvi. We have to show sincerity. नहीं तो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, बोल बच्चन बोलते हैं ना, बातें बड़ी बड़ी करेंगे. मुंह में राम बगल में छुरी. Very good. That is very easy. You can cheat me, I can cheat you very easily, but we cannot cheat Krishna. Right? हम लोग गुड़ी गुड़ी बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें बहुत बोल सकते हैं. And we are very good at it also. At least I am very good at it. So first thing, ये एक चीज सबके जीवन में होना चाहिए कि मैं जब तक अपने 16 राउंड नहीं करूंगा या 10 राउंड या 12 राउंड, whatever you are doing, I will not do anything. Why? Because I want to give Krishna priority in my life. I want to give Krishna priority in my life. I want to show by action. I want to show something by action. Second, strong association of devotees. भक्तों के साथ strong association होना चाहिए. This is the second primary duty. Right? What does it mean of strong association of devotees? What does it mean? आपको क्या लगता है? What does it mean to have strong association of devotees? भक्तों का संग का क्या मतलब होता है? चलो यार, let's go to movie together. Let's have cricket. Let's play cricket together. भक्तों में भी cricket हो रहा है. भक्तों भी पिक्चर देखने जा रहे हैं. हाँ? Team spirit. Okay. भगवत चर्चा होना चाहिए. मच्छता मदगता प्राणम बोधायंता परस्परम कथायंतश्च मम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. कथायंतश्च मम नित्यम. Krishna is saying in the 10th chapter, 10th verse. Krishna is saying, कथायंतश्च मम नित्यम. मेरी बातें जहां होती है वहां भक्तों का संग होता है. Or else I can be with one of the best devotees, and if I'm talking about share market में क्या हुआ आज 1 से 2% फॉल. हाँ, प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, हाँ, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, MCG में मैच आ रहे हो माता जी, वो पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान. If we talk about all this, then what are we doing? Devotee association? No, it is not devotee association. Devotee association का मतलब है revealing the heart, opening the heart in the way we can progress in bhakti. That is devotee association. So we can have right-minded association and we can have like-minded association. Like-minded का मतलब क्या है? पपलू और टपलू दोनों पिक्चर देखने गए. That is like-minded, है ना? और डिवोटी के नाम पे जाके पॉपकॉर्न और स्प्राइट पीएंगे, कोक तो नहीं पीते हम लोग. तो दैट इज लाइक माइंडेड. राइट माइंडेड एसोसिएशन क्या हुआ कि प्रभु जी, हाउ डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे? हाउ डू यू चैंट माता जी एक सिटिंग में 16 राउंड? आप क्या पढ़ रहे हो? भागवतम में 7th कैंटो में परीक्षित महाराज, सॉरी, प्रहलाद महाराज के बारे में आपने क्या पढ़ा माता जी? दैट इज डिवोटी एसोसिएशन. That is devotee association. Not talking about anything and everything under the sun. This is the second primary duty. The third primary duty of every neophyte practicing devotee is no prajalpa. No prajalpa. Prajalpa का क्या मतलब होता है? Gossip. किस चीज के बारे में माता जी? Useless talk. What does it like? Let's churn the topic. क्या होता है gossip में? हम क्या करते हैं? निंदा, fault finding. Okay, चलो और
हाँ, मूवीज के बारे में, यस, इसने आज वो पहना, वो पहना, हाँ इसने आज वो पहना है। हाँ, उसकी ज्वेलरी देखी तूने, उसके शादी में क्या, वो इसने क्या कपड़े पहने. वी थिंक एंड वी डिस्कस एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर व्हाट वी हैव टू डिस्कस. सो नो प्रजल्पा का मतलब, सबसे बिगेस्ट प्रजल्पा आजकल कहाँ होता है? मोबाइल पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया, मोबाइल पे बातें. एक जमाना था, इतना अच्छा लगता था, 3 मिनट 1 रुपया का फोन कॉल. याद है आप लोगों को? 3 मिनट्स और मम्मी पीछे से बूम पड़ती है, फोन मुक, फोन मुक, फोन रख, 1 रुपया गया और 2 रुपया गया. हाँ, बिलाओ से, बिलावे छे. मम्मी हमें पीछे से बोलती थी कि 3 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए. और आजकल मिस कॉल पे मिस कॉल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है. 6 मिस कॉल, 3 मिस कॉल, 1.5 घंटे से बात हो रही है, 2 घंटे से बात हो रही है. व्हाट इज हैपनिंग? वेयर इज आवर कॉन्शियसनेस? वेयर इज आवर कॉन्शियसनेस? सो नो प्रजल्पा का मतलब है एब्सोल्युटली वेरी क्रिस्टल क्लियर फोकस होना चाहिए लाइफ में, कि मुझे बस ये डिवोटी से ये चाहिए, ये डिवोटी से ये चाहिए. मुझे पता है इसके पास क्या मिलेगा, उससे क्या पास से क्या मिलेगा, नहीं तो नहीं चाहिए. दिस इज नॉट अ यूज मी बिन. पहले तो प्रभु जी एंटरटेनमेंट के तौर पर महाभारत और रामायण होती थी कि सब देख करते थे फैमिली लोग देख. हाँ, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट मोबाइल पर गया. व्हाट्सएप पे माता जी, इंडिया में सर्वे था कि एवरेज इंडियन स्पेंड्स 3 hours 52 minutes ऑन मोबाइल. और मैंने एक क्लास में बोल रहा था कि एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 3 hours 52 minutes. तो एक पीछे से माता जी बोल रही थी नहीं गलत है. मैंने अच्छा गलत है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मैं करती हूँ. वो माता जी के सामने से बोल रहे हैं इससे ज्यादा है. हो सकता है आप लेके जैसे यूजर बढ़ा सकते हो. तो 3.5 घंटे Prabhupada has given to us perfect. 2 hours of chanting, 1 hour of DT worship and reading Prabhupada books, 1 hour of reading. ये 4 घंटे सबके जीवन में आज अवेलेबल है. If anybody comes and says कि I don't have 4 hours a day to do chanting of 2 hours, to do reading of 1 hour and to do 1 hour of DT worship, that means something is really wrong in their life. Not acharyas cannot be wrong. Acharyas cannot be wrong. We are wrong. And the moment we accept we are wrong, then there's a room to change. Hana? How many people heard Bhagavad Gita? No. 3 people heard Bhagavad Gita. Arjun, Dhritarashtra and Sanjay. Right? देखा चकवारी आला? चकवारी आला? So 3 people heard Bhagavad Gita. Dhritarashtra, Sanjay and Arjun. How many people ended up changing their life? Huh? What is barbaric? जब मैं लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहा हूँ, लाइव टेलीकास्ट तो 3 जने ने सुनी थी, राइट? उस टाइम आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, सॉरी टू बी ऑनेस्ट. अच्छा वो हाँ, ओके, आई डोंट नो. ओके, अच्छा वो भी सुन रहे थे. वो पूरा टेलीकास्ट उन्होंने देखा था. प्रभुपाद जी के भगवत गीता में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, पर आई मे बी रॉन्ग. एंड बट जस्ट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 3 people heard Bhagavad Gita. Dhritarashtra, Sanjay and Arjuna. How many people changed their life? 2 people changed their life and 1 person didn't change their life. Similarly, we have a choice. We can be in Dhritarashtra category कि नहीं सुधरना नहीं है मुझे क्योंकि I know what am I doing, or I want to change. Even I can be a son of a driver like Sanjay, but if my boss doesn't want to change, so be it. I will change. That is Sanjay mentality. So we have a choice कि मुझे संजय mentality चाहिए or I want to be Dhritarashtra boss mentality. So it is very important. So Prajalpa, it is the most dangerous thing in our life. I'll again share something which I was sharing with someone yesterday only. मेरे पास ना Facebook है, no social media to start off with. On top of that, मैंने 5 से 6 साल हो गए आज तक कोई न्यूज ही नहीं देखा इंडिया का, ना एनडीटीवी, ना टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं देखा. कोविड के पहले से आई हैव टेकन अ वाव.
I've taken a vow कि मुझे कोई न्यूज़ से पड़ी नहीं है. हमारी गुजराती में उसको पंचायत बोलते हैं. पंचायत तत्ती जो थी. पंचायत आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते, समझ गए ना सब लोग. प्रजल्प हम लोग पंचायत बोलते हैं कि गामनी पंचायत में શું રાખ્યું છે. And it हाँ पारकी पंचायत. And then we spend half an hour and we say यार पंचायत છે. अरे पहला જ खबर હતી भाई. आता So it's been 5-6 years मैंने कोई न्यूज़ ही नहीं देखा. And today I can tell you with all my heart I have not missed anything. I have not missed single thing in my life. कोई इंडिया टीवी नहीं है. मुझे इंडिया में जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था ना, तो माय सन इज टेलिंग मी कि पापा इंडिया में लॉकडाउन हुआ है, और लॉकडाउन का वर्ड का मीनिंग भी मुझे नहीं पता था क्योंकि नई चीज़ है. एंड ही यूज्ड टू टेल मी, एंड ठीक है जो होगा होगा, बिकॉज वी आर इन अ लॉकडाउन. We are in a lockdown. We started our life in a lockdown. 9 months in mother's womb we were in a lockdown. रोते रोते आए हैं, रोते रोते जा रहे हैं. वो लॉकडाउन नहीं है क्या? That is the biggest lockdown. 2 महीना, 6 महीना, 2 साल का लॉकडाउन नहीं है. Now we have an opportunity to get out of this. We should not be worried about some temporary lockdown. We were 9 months in a mother's womb. I'm sitting over here. मैं 15 साल से I was telling निशान प्रभु 15 साल से कभी से बैठा नहीं हूँ because I've got knee problem. And ऊपर नीचे हो रहा हूँ. Imagine 9 months in a mother's womb with all the rubbish. उसमें हम तड़प के बाहर आते रोते रोते, और उसके बाद भी रो रहे हैं. लेकिन अभी अक्ल नहीं आ रही कि मुझे यहाँ से जाना है. This human form of life is not meant for laughing. It is meant for crying. This human form of life is not meant for laughing. It is meant for crying. Crying for Radha and Krishna. ये जीवन रोने के लिए है कि मैं अलग हो गया हूँ पापा आपसे, मम्मी मैं आपसे अलग हो गया हूँ, बचाओ मुझे. हम लोग मम्मी पापा को भूल के हंसी मजाक में एक घर बना रहे हैं, दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, फिर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. एंड द पर्पस इज वी आर फॉरगेटिंग द पर्पस. ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड. ये सुना? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड. फर्स्ट क्लास अपोलो में सर्जरी हुई, हाँ डॉक्टर भी बेस्ट था, लेकिन पेशेंट मर गया. तो क्या पाया? अपना ऐसा हाल है. मानते हो या नहीं मानते हो? डू वी ऑल अग्री विद दिस? सो द थर्ड इज नो प्रजल्पा. नो प्रजल्पा. मेरे व्हाट्सएप, आई हैव व्हाट्सएप, बट मेरे एक भी ग्रुप में नहीं हूं मैं. ना मेरे मम्मी के साइड के ग्रुप में हूं, ना पापा के साइड के ग्रुप में, ना कोई फ्रेंड के ग्रुप में हूं. If someone wants to contact me, they know how to contact me. If I am needed, people will come to me. कोई ग्रुप का चक्कर ही नहीं. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, ये यही आता रहता है. हाँ ना, यही आता रहता है ना. इसकी बर्थडे, वो मर गया, उसकी शादी है, उसका फोटो, इसका टिकटॉक, इसका, अरे क्या लगा यार. नहीं उसकी बर्थडे में मैसेज नहीं आया. हाँ उसका मैसेज नहीं आया. हाँ, फिर उसका अलग चक्कर. अरे अपने जीवन में आग लगी पड़ी है. हनुमान के पूंछ पे आग लगी थी, उसका फायदा उठाया उसने, लंका को आग लगाई है. तो हमारे जीवन में आग लगी पड़ी है अभी. वी आर ऑन फायर, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. वी आर ऑन फायर. वी आर अबाउट टू चेंज टू द नेक्स्ट बॉडी. अ डिवोटी मेक्स पोस्ट डेथ प्लान. अ डिवोटी मेक्स पोस्ट डेथ प्लान. अभी अगर आपको पूछो ना कि प्रभु कल का क्या प्लान है, तो you know exactly what you're going to do tomorrow, correct? If I ask you, Mataji, Sunday का क्या plan है, तो you will say birthday party है, this grocery, whatever. But if I ask you, Priyanka Mataji, if you die on this weekend, where are you going to go? Can you die on this weekend? Sorry, I'm not trying to put her on spot, but can you die on the weekend? Pakka. सुबह प्रभु हंस रहे हैं. Sorry, I didn't put, right? So if someone asks you, if you die on the weekend, where are you going to go? And if we don't have an answer for that, then there's no difference between us and animals. Ahara nidra bhay mein tumcha dharmo hi hai na pashu bhi samana. That is animalistic life. कि वो कुत्ते को भी नहीं पता मरने के बाद क्या जाने वाला, चिकन को भी नहीं पता कुछ कटने के बाद क्या जाने वाला है, और मुझे भी नहीं पता. तो क्या पाया मैंने जीवन में? So devotees focus on post death plans. कि मैं मरने के बाद ना, मैं ये वैकुंठ प्लान है, मैं ये गोलोक वृंदावन में जाऊंगा, गोलोक वृंदावन में ये करूंगा. दिस इज व्हाट अ मेडिटेशन शुड बी. ये सोचना चाहिए हमें कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल के बाद. वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट. हम लोग क्या सोचते हैं,
पॉइंट कुक में घर ले लिया, अभी थोड़ा विलियम्स लैंडिंग जाना पड़ेगा, विलियम्स लैंडिंग गया, फिर तुरक, फिर अल्बर्ट पार्क, ये गाड़ी अपग्रेड, दिस अपग्रेड एंड दैट, अपनी शरीर अपग्रेड होने वाला है वेरी क्विकली. वी आर गोइंग टू बी अपग्रेडेड टू अ न्यू योनी. But if I think if I have to go to Golok and Vrindavan after this, like after this birth or life, whatever, what would we do there? What will we do there? गाना सुनो. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, जहां आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बसे. तो वो भावना है क्या? हाँ, वो भावना क्या है जब गम भी नहीं है खुशी भी नहीं है? इट इज जस्ट अनलिमिटेड ब्लिस. अनलिमिटेड ब्लिस माता जी. तो अभी तक फील ही नहीं किया तो मैं कैसे सोचूं मुझे जाके वहाँ वो मिलेगा? इसीलिए श्रवणवता स्वाकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तन. वी हैव टू लिसन. हमें सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भक्तों के बारे में सुनना चाहिए. जब मैं, आप लोग का पता नहीं, मैं जब इंडिया में था एंड आई वांटेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने स्टूडेंट के टाइम में ऐसे ऐसे पोस्टर दिखाते थे. ग्रीन ग्रास, एक लड़की पढ़ रही है, गोरे गोरे लड़के हैं, वो देख के मुझे ऑस्ट्रेलिया आने का मन कर रहा था. आप लोगों का पता नहीं, मैं तो इसी में स्लिप हो गया. लड़कियां गोरी, लड़के गोरे, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये देख के ही मुझे ऑस्ट्रेलिया आने का मन हो रहा था. राइट? आप लोगों का ऐसा था? नहीं, आप लोग पढ़ने नहीं आए. ओके, यू वर ऑल केयर वेरी. मेरा तो ऐसा ही था मतलब कि जब पता चले कि वहां क्या है, तो सेकंड कैंटो ऑफ भागवतम में प्रभुपद राइट्स व्हाट इज देयर इन गोलोक वृंदावन. एवरीबडी ऑफ अस has a private plane studded with gold and jewelry. हर बंदे के पास खुद का प्लेन है. हम यहाँ इकोनॉमी क्लास में जाने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेट अलोन बी प्रीमियम इकोनॉमी बिजनेस क्लास, तो भूल ही जाओ. पता नहीं कोई BMW वाले अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात कर रहा हूँ. राइट? आई कैन नॉट अफोर्ड. हाँ, वो तो अलग है. बट तो वहाँ पे सबके पास इतना अनलिमिटेड वेल्थ है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, एंड जस्ट बाय सर्विंग कृष्ण. बट इसके बारे में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए. वी हैव टू थिंक. दैट इज द रीजन 1 hour ऑफ रीडिंग, 1 hour ऑफ DT वर्शिप एंड 2 hours ऑफ चैंटिंग द होली नेम. वाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग प्रजल्पा में इतना टाइम कर देते हैं, पता ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं. जस्ट इन कंटिन्यूएशन टू दैट क्वेश्चन कि हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अबंडेंस ऑफ वेल्थ, हैप्पीनेस और वो सब है, तो फिर वो भी तो एक माया ही हुई. मतलब 2 parts ऑफ दिस क्वेश्चन. सो एक तो वो भी एक माया ही हुई कि अगर मैं उस चीज के लिए भाग रहा हूँ, मतलब कि मेरा एक प्राइवेट, जस्ट एन एग्जांपल, कि प्राइवेट जेट हो और वो सब चीजें, तो दैट्स अगेन माया. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज कि how should I put it? Basically, maybe I'll frame it better and then I'll come to you. But maybe for the first one, in the meantime. It's a very good question. If we are looking to achieve something over there for our sense gratification, then it is Maya. कि मैं वहाँ जाके बहुत करूँगा, बहुत खुश रहूँगा, then it is Maya. But we go to spiritual world to serve Krishna. नहीं, not योग माया, माया नहीं. जीवरे स्वरूप हो कृष्ण और नित्या दास. So when I'm serving over here and when we serve over there, there is no difference. If you can serve over here Krishna, then we don't have to go back to Krishna. Na dhanam na janam na sundarim kavita mam jagdish kamaye mama janmani janmani ishware bhavtar bhaktir ahituki. So Sri Chaitanya Mahaprabhu in the 4th verse of Shishtastakam says कि ना मुझे धन चाहिए, ना धनम ना जन्म, I don't want good parentage, ना धनम ना जन्म, ना सुंदरिम, I don't want beauty. What do I need? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्तिर अहितुकी. What do I need? I want to serve you unconditionally. So हम अगर यहाँ भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो a devotee doesn't aspire to go back to Golok Vrindavan कि मैं वहाँ जाके मजा मस्ती करूँगा. But if you don't want to serve here and if you want to make a choice that I want to go back to Golok Vrindavan and serve, then absolutely fine. That is the reason in 1944 when Prabhupada started his first magazine, it was called Back to Godhead. It was very clear. Prabhupada was very, very clear. Back to Godhead. Nothing in between. No stops. No stopping all stations. So basically we are saying that
कि अगर मैं अनकंडीशनल सर्विस कर पाता हूँ कृष्णा के लिए विदाउट एनी हैसल्स, करेक्ट, तो दैट इज द एक्चुअल हैप्पीनेस। करेक्ट। क्योंकि जो आत्मा का जो स्वरूप है ना, जो आत्मा का जो नेचर है, द नेचर ऑफ सोल इज टू सर्व। द नेचर ऑफ द सोल इज टू सर्व. We either serve Krishna or we either serve Maya. But without service, the soul cannot be quiet. The soul is dynamic, it is not static. The soul is dynamic, it is not static. So you cannot just sit over here and do nothing. Even when we are doing nothing, we are doing something. कुछ तो करोगे पार्थ. Krishna says ना भगवद गीता, कुछ तो करोगे पार्थ. खाना खाओगे या नहीं खाओगे, काम करोगे या नहीं करोगे, बट नहीं करना भी कुछ करना है. Right? So coming back, we'll take questions towards the end, but I just want to finish on time and I'm a bit late for 5 minutes for me. क्योंकि मुझे ब्रिजेश बाबू ने बोला था 8:30 8:40 तक आप लोग फिनिश कर देते हो. Is that right? 8:30 8:40? हाँ? Okay, so okay. I like to finish on time. मेरा कीड़ा है माता जी, to start on time. कंटेंट तब तक कर दो, क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे. हाँ? कंटेंट यू कैन ट्राई टू फिनिश, बट क्वेश्चन आंसर वी कैन. Okay. So we, who remembers the four primary? No, the last primary duty is we should have gratitude towards Krishna and Srila Prabhupada. We should have gratitude कि मुझे क्या मिल गया है, ये भक्तों का संग. Friday night, imagine 1 year, 2 years, 5 years before हम लोग क्या करते थे. आप लोग तो साधु संत हो गए, लेकिन मुझे पता मैं क्या करता था. On a Friday night, I knew what exactly I was doing. Rubbish, waste of time. So we should have this gratitude कि ठाकुर जी ने मुझे क्या दे दिया है. हरि नाम मिल गया है, प्रसादम मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है. I just want to hang on with them and go back to God in this lifetime. We should have gratitude for this. So these are the 4 primary duties. Who remembers the first primary duty? Chanting 16 rounds in one sitting. Huh? Without leaving home. घर छोड़ना नहीं चाहिए जब तक मेरे 16 राउंड नहीं हो गए. I want to prove to Krishna, I want to show to Krishna that chanting is my priority. Krishna, you are my priority. Not work is my priority, not kids are my priority. We don't ignore our responsibility at the cost of Krishna consciousness, but we get up early in the morning. Right? We get up early in the morning, we finish what we have to, and then we justify everything else. क्योंकि हमने संसार खड़ा किया है. Giving Krishna focus and then ignoring our responsibility, that is also not right. That is not right. Second, what is the second important point? Strong association of devotees. Third point, no prajalpa. Social media, newspapers, फालतू के बातें, मोबाइल, it is all waste of time. अपना consciousness पहले से बिगड़ा हुआ है, हमें और बिगाड़ रहे हैं. So we should be very, very focused. And fourth point, very good. So these are the primary duties on the platform of Atma, soul pe. Secondary duties. The first secondary duty is looking after our health. Looking after your, this should be the top priority. When Prabhupada used to write letters, and letter के end में क्या लिखते थे? Your ever well-wisher, AC and take care of your health. Prabhupada हमेशा health को focus देते थे. Prabhupada never said chant 16 rounds, follow 4 regulative principles. उनके letter में से कभी नहीं लिखा है. Health. अगर health ठीक नहीं है, तो nothing is fine. पहले के ज़माने में क्या होता था? In olden days, if health is lost, everything is lost. If wealth is lost, something is lost. Health is lost, something is lost, character is lost, everything. Everything. तो that is where I'm coming. Na? What is it? If health is lost, Something is lost. वो सेकंड पे पहुंचे ना. अभी second पे पहुंचा ना. But anyways, coming. So health is the top priority. Health अगर health पे focus नहीं करेंगे ना हम लोग, we will not be able to do material duties and spiritual duties. दोनों में गड़बड़ हो जाएगी. Just before coming over here, we went to a Mataji's house, a very close friend of ours. 3 days or 4 days, she's on the bed. And she's unable to get up. Young family, very young family. Right? So health is very, very important. Very important. Second most important
एक सेकंड. Second is wealth. Just because we are in Krishna consciousness, हमें अपने earning पे compromise नहीं करनी चाहिए. कई बार devotees when they come into Krishna consciousness बोलते कि पैसे माया है. No. Never think that. Money is not Maya. If we use that Lakshmi in the service of Narayan, it is perfection. If we use Lakshmi in the service of us, that is Maya. So, as practicing devotees, neophyte devotees, or upcoming devotees, wealth should be given equal priority. But Prabhupada said, use money as my blood. What did Prabhupada said? Use money as my blood. So हमें पैसे कमाने हैं, सेव करने हैं, so that we can retire early. By 50, we should try to retire from active working life. 50 साल तक we should finish our business of earning money. उसके बाद भी काम कर रहे हैं, डॉकलैंड्स में जाके, सिटी में जाके वही काम कर रहे हैं. Then we are wasting the rare human form of life. So we should plan a life in such a way that by 50 we are finishing if possible. Because 50 के बाद कौन सा आश्रम होता है? वानप्रस्थ. So we cannot go to Van means jungle. But at least where we are, we should try to do maximum bhakti. ठीक है? Then next, family. Family is very, very important. We should try and give good time, quality time to kids, to wife, to husband. It is very important. To parents. It is very, very important. हम लोग क्या करते हैं? जब kids are around, we keep chanting. Chanting खत्म नहीं हुई है. Chanting कर रहे हैं. Kids will feel left over. Chanting बच्चों के उठने के पहले अगर हो जाती है, अपना जो morning duties of sadhana, if we can finish on time before the kids wake up, they will feel more loved, or they will be feeling as they are shade. You know, they will have enviousness and jealousy towards Krishna consciousness. कि यार, my time, my parents are spending in chanting and doing this and that. No. Chanting बच्चों के उठने के पहले अगर हो सकती है तो खत्म करनी चाहिए. We should finish our साधना. सुबह साधना इतनी strong होनी चाहिए कि पूरे दिन में हिल ना पाए. But हम लोग उल्टा करते हैं. We get up late. Why? Because we sleep late. Why do we sleep late? Because we eat late. The whole cycle is wrong. अपना फंडा ही wrong है शाम का. It is not important what time we get up in the morning. The most important thing is what time we go to bed. Because सोने का प्रॉब्लम होता है. Prabhupada has given us everything. 10 to 4 Prabhupada has said. 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ. There is a difficulty. 10 बजे सोने के बाद 4 बजे उठने में प्रॉब्लम क्या है? And 4:10 to 6 o'clock you chant. 6 बजे तक chanting खत्म हो जाती है. Why is the problem? Why can't we get up in the morning? We should ask this question. Why can't I get up in the morning? If I want to give Krishna priority, if I want to show my sincerity, एक छोटी एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, या सीए पढ़ने के लिए, या एमबीए करने के लिए, या डॉक्टर करने के लिए हम कितना सुबह कितना मेहनत करते थे ना. आई कम फ्रॉम साउथ इंडिया, हैदराबाद में ईयर 8 से, इफ यू आर इन ईयर 8, तब से आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू करवा देते थे. फ्रॉम ईयर 8, कैन यू बिलीव दैट? तो हमें जन्म मृत्यु के साइकिल में से निकलना है. सो फैमिली शुड बी गिवन टाइम. एंड द लास्ट, social life, friends and family, we should select them very carefully, and we should spend time very, very wisely with them. Not catching up with friends and family of previous lifestyle. We cannot progress. See, we have 3 types of life, and I'll stop over here. हम सबकी 3 life है. We have a public life, we have a private life, and we have a secret life. I repeat, and if you agree with me or not, I don't know. We have a private life, जो husband, wife, बच्चों के साथ में होती है. ठीक है, that is private. We have a public life. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी. That is very, very public life. सबके शक्ल पे अच्छा रखते हैं हम लोग. And then we have a secret life, which only me and my Paramatma knows. कि मेरे दिल में क्या चल रहा है. My wife doesn't know. My husband doesn't know. My parents doesn't know. But everybody has a secret life. Yes or yes? Yes or yes?
सबके पास होता है, नो का सवाल ही नहीं है. So we have a secret life, and to know the secret life, you test yourself when you're alone. What do you do? That is secret life. When you're alone, that is secret life. Private life, open बीवी बच्चे के साथ, parents के साथ, and then we have a public life. So we need to have this 3 lives as one life. 3 life अलग अलग नहीं चाहिए हमें. We are very confused. Public life अलग, private life अलग, secret life अलग. We should have one life which is aligning with the life of Krishna. With this, I'll stop over here. Shri Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So we'll do a very, very quick rapid fire round. Karan with coffee with Karan. Coffee with Karan में rapid fire round होता है ना. So 1 point from everybody to summarize today's class, and then we'll have an open forum. ठीक है, 1 point. Very, very quick and short point. We'll start with you. प्रभु आपका नाम बोलना, so that at least just call out your name so that I know your name, and 1 point. My name is Rahul, and I think summary is कि we should keep Krishna in center. Keep Krishna in center. Thank you. Rahul, नाम तो याद है. Yes. Anuj, the key takeaway point was कि every Kashi introspect that where am I leading in my bhakti or in every other sense. Ekadashi is a day of counting and accounting. Ekadashi is a day of counting and accounting. Where am I? कहाँ जा रहा हूँ यार life में? My name is Sumit. The take is chant 16 round without which I am not doing sincerely. There's 1 point. If we can just follow, मैं घर नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं 16 राउंड करूँ. Work from home ने आदत बिगाड़ दी है. हाँ? Work from home ने आदत बिगाड़ दी है. Work from home ने आदत. प्रभु honestly ना, प्रभु even I work from home 2 साल, आज तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने chanting 6 बजे के पहले finish नहीं किया. Before 6 o'clock chanting finishes. नेहा माता जी knows. We have a group 4:30 से लेके 6:30 तक every day non stop 2 घंटे में chanting होती है. कितने लोग आते हैं? I get up before because 6 बजे मैं I have to go for shower क्योंकि 6:30 मेरी क्लास होती है CC reading. एक दिन ऐसा नहीं हुआ. Why can't we do it? So we can do it. And there are many people. हाँ? बस प्रायोरिटी की बात है प्रभु, और कुछ नहीं है. प्रायोरिटी की बात है और कुछ नहीं है. अगर सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी है तो जा उठेंगे ना. तो this is much more than a flight. This is a flight to Golok Vrindavan. We cannot compromise. We should not compromise. But thank you प्रभु. सुमित प्रभु आपने प्रणय. जो होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, so we don't think too much about that. जो होता है भगवान की मर्सी है. We should take it in that mood. Thank you. विपिन. Surrender everything to Krishna. सर्वधर्म परित्यजाय माम एकम शरणम व्रज. अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षमाशुचः. Thank you. प्रभु શું નામ છે તમારું? મિતુલ. मुझे अपनी कॉन्शियस सॉरी ऐसा नहीं बोलूँगा, अपना साधु संग यानी जो डिवोशन अपना जो ग्रुप होना चाहिए वो रेदर देन नॉन डिवोटीज हो, तो अपनी कॉन्शियस और जो ग्रुप में जो बातें होती है जैसे भगवत चर्चा पे बोला वो एक होना चाहिए, तो क्या है कि हम राइट पाथ में रहे. So we should have strong association of devotees. We are not wanderers. We are travelers. Wanderers का मतलब इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, इधर भी चले गए. So we are not wanderers. We are travelers. Travelers knows कि मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में से. I know exactly what I want. That is traveler. Wanderer means जो मिला ठीक है, right? So that is the difference. So we don't want to be wanderers. We want to be travelers. Thank you, Prabhu ji. आशीष प्रभु. Discipline, observe करो, then everything will follow. 4 D's: discipline, determination, destination, and sorry, I forgot the 4th D. This was my pet term. A devotee has discipline with determination to change the destination. 4 D's. This is devotee. तिलक लगा 500 रुपए का डिवोटी नहीं बनना है. We don't want 500 rupee devotees. We want a devotee with discipline, determination to change the destination. Thank you. Ashish Prabhu, right? Sachin Prabhu.
showing gratitude to Lord Krishna and Sri Prabhupada and keeping Lord Krishna in the center of whatever we do. Keeping Krishna in the center of whatever we do. Thank you. Mataji. Sakshi Mataji. Only one point that motivated me and जो आपने आज repeat भी किया that जिन वो बिना कहे उन्होंने जितना कुछ हमें दे रखा है जिन हमारी वो औकात ही नहीं है हम वो मांगने में हमारा होना ही नहीं चाहिए we should just be grateful and thankful and try to mold our lives towards them कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है उनसे Deserve first and then desire. Deserve first and then desire. हम लोग क्या करते हैं? We desire first and we whinge कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. Thank you. Very nice. माता जी. विनीता, अच्छा आप होस्ट हो, आप कुछ भी बोल सकते हो माता जी. आपको पूरा छूट है. तो शायद मैं ही हूँ. जो भी करना है वो सिंसियर होके करो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर 4 राउंड भी आपको करने हैं तो बहुत सिंसियर होके कृष्ण को ध्यान में रखते हुए उनको कर देंगे. So we are not. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. This is what is important. We are not round conscious. We are Krishna conscious. ऐसा नहीं कि कोई 16 कर रहा है, कोई 32 कर रहा है, कोई 64 कर रहा है तो महाभक्त बन गया. नहीं. मैं जो करूँगा परफेक्ट करूँगा. भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेरी सिंसियरिटी दिखाऊंगा. My sincerity is my God consciousness. My sincerity is my God consciousness. Thank you. माता जी. पूजा माता जी. Which one? अच्छा, your favorite, okay. Questions we can have during Prashadam time. We just want to have rapid fire round. है ना? We can have. हाँ, कोई बात. You can talk to my wife or myself, anything. नेहा माता जी. हाँ, पोस्ट डेथ प्लान. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू माता जी. श्वेता माता जी. हाँ. We all have a secret life. It's just between me and Krishna. No one knows. It's just the Yes. heart that knows. So doctor knows what is in the heart, and Krishna. Krishna knows what's in the soul. Correct. Thank you. प्रभु जी आप. नहीं अच्छा आप भी कुछ भी बोल सकते हो. Host can do anything. Everything is doable. From chatting to playing with kids, you just have to arrange a few things. Balancing. We just have to balance. ये जो हमने डिस्कस किया ना, nothing is new. It is nothing is new. There is no philosophy. It is just rearranging the Legos in such a way that it is looking nice. वो जब माता जी से एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, माता जी से एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो ऊपर का गड़बड़ वाला दिखता है. ऊपर कितना इट इज ऑल ओवर द प्लेस. पर नीचे सॉरी नहीं, हाँ करेक्ट. मैंने नहीं किया ना. तो द सेम थिंग कि नीचे का गड़बड़ दिखता है, ऊपर का. तो अपने लाइफ में भी ऐसा है प्रभु. We just have to have patience, tolerance and plan life. Having no plan is a plan to fail. Having no plan is a plan to fail. Thank you. माता जी. रिचा माता जी. और मैंने सीखा है कि the listening is the best thing. Listening किसके बारे में करना है वो हमें choice करना है. But listening is of course the ego and taking. Very nice. Listening. सुनना ही सबसे बड़ी चीज है. उसमें आधा आपको आ जाएगा, आधा आपको शक्ति मिलेगी करने की, और वो आपको बार-बार फोर्स करता है कि वाकई करना है. Thank you, रिचा माता जी. रेखा माता जी. 1 hour of reading is very important every day. हाँ. That is my takeaway point. चाय.
जय माता जी. रीडिंग whatever Prabhupada has told ना, it is very practical. अपने आचार्यस ने ऐसा कुछ नहीं बोला हमें कि we cannot do it. माता जी. मीनू. हाँ. She's my bhabhi and Oh. came from India. And Okay. this is the first time she came here. जय माता जी. आपकी नेहा माता जी very sincere. She is very very enthusiastic in bhakti. तो आप we are very fortunate to have her. कृष्णा को भूलना नहीं है. हाँ. कृष्णा को नहीं भूलना. Thank you. कृष्णा को वो कहते हैं मुझे कि सुबह में उठो आप जल्दी करो. मैं यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग नहीं करती कुछ भी. देखती हूँ इंडिया जाके कुछ होता है. थैंक यू. माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे माता जी? नहीं. थैंक यू माता जी. ममता. मुझे ऐसा लगा कि I was doing another round, like reading 1 hour, chanting. क्या क्या क्या? 2 hour reading and 1 hour chanting. हाँ. So it's the other way around. थैंक यू माता जी. विजेता. हाँ. आज की इसकी सबसे अच्छी बात लगी कि we have to keep our hearts clean because that's the place Krishna will come and reside. And always think of service to God because that's the way we can think of that blissful situation when we go to Goloka. थैंक यू. वेरी नाइस. माता जी. Krishna Prabhu, my name is Richa. विचा. So first of all, very very thank you, Prabhu. We are very fortunate to have your association, and there were many key points, but the one which really touched to my heart, and I have heard it first time, that our consciousness, our sincerity is our God consciousness. So just like you said that we have to prioritize everything. That I also need to prioritize that I should take some vow that without chanting I will not take my breakfast, something like that. So that I can do. That was my teaching. Thank you. थैंक यू माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. स्नेहल. मुझे सबसे अच्छा वही लगा जो 16 राउंड वाला. अभी मैं 16 राउंड बट टुकड़े टुकड़े में हो रहा है. अभी मैं ट्राई करूंगी कि सुबह जल्दी उठूं, जो मेरा सबसे नहीं पाती. हम उठ नहीं पाते लेकिन हमारा उठने का टाइम आ गया माता जी. वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट. है ना? हम अलार्म बजता है बट सोचती हूँ आधा घंटा और बड़े देर से हो जाएंगे राउंड तो पूरा दिन करना. 16 राउंड के बिना कुछ नहीं करूंगा मैं. एक इंडिया में था ना, एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं. ऐसा था ना, एसएल वर्ल्ड जाऊंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं. सिमिलरली एक भक्त के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाऊं. आज मेरी मृत्यु भी आ जाए ना, आज के 16 राउंड के बाद ही तू मुझे ले जाना. दिस शुड बी आवर डिटर्मिनेशन. दिस शुड बी अ प्रेयर टू प्रभुपाद. इफ आई हैव टू डाई टुडे, यू प्लीज टेक मी आफ्टर आई फिनिश माई 16 राउंड्स. उसके पहले नहीं. इतनी सिंसियरिटी दिखा दी, बस दैट इज इट. 16 राउंड के बिना ना पानी, ना खाना, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, व्हाटएवर. अपने घर में जो सुविधा हो सकती है वो हिसाब से, बट प्रैक्टिकली. हाँ हेल्थ, बट जब प्रैक्टिकली, डोंट बी फैनेटिक, बट वी शुड बी वेरी श्योर. वी शुड शो सिंसियरिटी टू कृष्णा. जैसे माता जी ने बताया ना, यू कैन चीट मी, आई कैन चीट यू, बट वी कैन नॉट चीट कृष्णा. माता जी आपका नाम बताइए. ईशा. हाँ. आज की क्लास में इतने सारे की टेक अवे पॉइंट्स हैं और मतलब इट्स अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट. ना सोचते रहो वी नीड दिस फूड ऑफ थॉट अगेन एंड अगेन. सो आई होप आप आगे भी हमारी क्लास लो. की टेक अवे पॉइंट्स मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट वाज कि ग्रैटिट्यूड वाला, कि हमारी आई साइड का, जैसे आपने बोला, विजन. अगर हम यही रियलाइज करने लगे कि हमारे पास इतना कुछ है तो मे बी हमें शर्म आ जाए और हम सच में उनको प्रायोरिटाइज करके उनके लिए सब कुछ कर बैठे ना, लेकिन हम नहीं करते और अपना ही माइंड अपने आप को देता रहता है लॉजिकल रीजन. नहीं, अगर मैं टायर्ड हो गई तो फिर हम भगवान को कैसे करेंगे, अपने ही रीजन्स भगवान के लिए भी देता रहता है. बट अगर हम सच में ऑनेस्टली सिंसियरली करना चाहते हैं, तो ग्रैटिट्यूड विल मोटिवेट अस और फिर वही सिंसियरिटी आ जाए और भगवान जी के लिए हम कुछ भी करने में वो रहे रेडी रहे. थैंक यू माता. वेरी नाइस. माता जी. अलका माता. Prabhuji, actually keep the Krishna in the center. That was the key point for me. And the second one was the prioritizing.
Normally, I do the chanting at the end of my day, which is like at 10:30. So I felt actually today after listening this, and I used to blame like I can't wake up because I'll be asleep. Like yeah, so I felt very bad. And I'm prioritizing myself. So basically, I should prioritize Krishna. So this changed me. See, Mataji, if we are chanting 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, if you're going to chant, why not chant in the morning? अगर करना ही है, अगर chanting नहीं कर रहे तो अलग बात है, लेकिन कर रहे हो, करना ही है, तो why not do it in the morning and show Krishna, this is what I can do for you. This is my offering to you. This is my offering to you. अगर कृष्णा तड़पा के सांस देंगे एक सांस, तो हम लगे यार शराफत से दे दे यार, तड़प रहो, है ना? इन द सिमिलरली हम अगर भगवान का नाम भी तड़प के 10 बजे 10:30 बजे सोने के पहले कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट रिवॉल्विंग द बीड्स, नॉट चैंटिंग एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ माता जी. Anything what we do for 21 days, that becomes a habit. And what we do for 90 days becomes a lifestyle. It is just creating few small changes. Small changes, not radical changes. नहीं तो घर में सबको झिल जाएगा. Small changes. And even we used to struggle. मेरा एक favorite dialogue है. मुझे बहुत like this is. If I'm struggling to get up at 5 o'clock, if I'm struggling to get up at 6 o'clock, if I'm struggling to get up at 8 o'clock, and if I'm struggling to get up at 3:30, I might as well struggle to get up at 3:30 rather than 8 o'clock. आज तक कोई हंसते उठा है? कोई उठा है? हमेशा रड़ते यार वापस उठना पड़ रहा है. कोई भी हंसते उठा नहीं आज तक. क्या मजा आ गया उठने में. So if you're struggling to get up at 8 o'clock, if you're struggling to get up at 6 o'clock, if you're struggling to get up at 4 o'clock, so you might as well struggle to get up at 4 o'clock, but look at the day. Look at what you get. How Krishna reciprocates. So it is about just prioritizing Mataji. और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है. Mataji. हरे कृष्ण. ज्योति माताजी. प्रभु जी, मैंने भी आज सिंसियरिटी वाली बात पे बहुत क्योंकि मैंने भी यही सोचा कि मैं 6:30 बजे जब जॉब के लिए सिंसियर हो सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपनी चैंटिंग कर रही हूँ. मैं अभी बहुत पीछे हूँ, बट आई विल ट्राई. अगर जॉब पे 6:30 बजे पहुँचे तो पहुँच जाते ना. रोज जाती हूँ. हाँ. तो फिर हम भगवान के लिए क्यों नहीं, अपने लिए, भगवान को अपनी आवाज नहीं चाहिए. He doesn't need a patram pushpam phalam toyam. He doesn't need it. He doesn't need a chanting. We need to show our sincerity कि देख अभी मैं उठाओ, ये मेरी सिंसियरिटी. इतना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया जीवन में, अभी आँख खुली है भक्तों की मेहरबानी से. प्लीज एक्सेप्ट दिस लिटिल ऑफरिंग, माय एफर्ट. बस वही दिखाना है. माता जी. So your name is Manija. Very nice. Yeah, every time I do want to chant, you believe it or not, Krishna will wake me up 4 o'clock. Jai. Every day I'll see my time. It will be 4 o'clock, but still I'll sleep. But I can't sleep. He's waking me up to do chanting, and I feel like that he's waking me up, and I'll see my time. It will be 4 o'clock, but still I'm going to sleep, not chanting. But today I'm going to take a vow that I do chant, and I'll show my love to Krishna. Please give a round of applause to Mataji. Hari bol. Very nice. Very nice, Mataji. Just chant, Mataji. Chant, just chant. Chanting, but not early in the morning, just later the day, 3 to 4 rounds a day. Very nice. But every day I feel like I have to do early in the morning, but I'm waking up. I told Mataji as well, Krishna is waking me up early 4 o'clock, but still I'm not doing. Very nice. 99% of our spiritual advancement is based on chanting Hare Krishna mantra. 99% of our advancement in sadhana, in Krishna consciousness, is on chanting the Hare Krishna mantra. Baki 1% is in everything else. We are focusing on 1%.
ignoring the 99%. That is our. Thank you so much. Thank you for. I think I've covered everybody. किसी को भूल गया हो तो माफ करना. But thank you so much. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. अरे प्रभु जी ऑनलाइन में उनको कुछ क्वेश्चंस. पूजा माता जी, पूनम जी, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? हरे कृष्णा. Hare Krishna, Prabhuji. No, thank you. Okay. No questions. Very comprehensive. Thank you.